Chapter number 4, construction of triangles. Main topic is how to draw perpendicular bisector. You have already studied in last year how to draw perpendicular bisector. Take an example, perpendicular bisector. How to draw perpendicular bisector? Draw any segment. This is the segment. Draw any segment that is 5 centimeter. This is the AB. AB is any segment. So AB equal to 5 centimeter. Take 5 centimeter distance in your ruler. This is a 5 centimeter. Then take more than half distance in your divider. Take more than half distance. So take more than half distance in your divider and make an arc from point A. Okay. Take more than half distance in your divider. So this is the divider, and make an arc from point A and make another arc from point B and intersect both arc. Okay. So draw a perpendicular bisector from this point, and this is the perpendicular bisector. So this distance and this distance will be equal. This is the perpendicular bisector of seg AB. This is the method of how to draw perpendicular bisector. Then by using this perpendicular bisector, construction of triangles, there are 3 types of construction of triangles. That is first method, that is construction 1. To construct a triangle when its base, an angle adjacent to the base and the sum of the lengths of remaining sides is given. So this is construction 1. To construct a triangle when its base, an angle adjacent to the base and the sum of the lengths of remaining sides is given. Example number 1, this is the practice problem. So construct triangle ABC in which BC equal to 6.3 centimeter, angle B equal to 75 degree and AB plus AC equal to 9 centimeter. Okay, so first make a rough figure. Rough figure is, this is in triangle ABC. BC is the base. So first take segment, draw a segment BC 6.3 cm. This is the rough figure. Draw a segment BC 6.3. 6. So this is the 6.3 and this segment is BC. Okay, BC equal to 6.3 centimeter. This is the 6.3 centimeter. Then angle B equal to 75 degree. Then put protractor on point B and make an angle 75 degree. 75 is acute angle. So this is the 75 degree. Okay, 75 degree. Then AB plus AC equal to 9 centimeter. So draw a line AB plus AC equal to 9 centimeter. Take a distance 9 centimeter and draw a line through this 75 degree angle. This is the 9 centimeter and draw a line. Okay. This is 9 centimeter. This is our rough figure. And this is the point. Suppose this point is D and this is the point P and this angle B is 75 degree. Then joint DC. Then joint DC. Okay. Then draw perpendicular bisector through this point DC. Okay, this is your rough diagram. Then
we draw triangle ABC. So first take a distance 6.3 centimeter and draw seg BC. This is the rough figure. Rough figure is for 2 marks. Six point 3 centimeter. Okay, this is the B and this is C. And second, measure of angle B equal to 75 degree. Then make angle B, and angle B is 75 degrees. So this is 70, this is 75 degree. Take distance AB plus AC equal to 9 centimeter. So draw a segment through this 75 degree angle is 9 centimeter. So this is the 9 centimeter, here this is the 9 centimeter. So draw a segment from this point 75 degree and make a segment 9 centimeter. This is the 9 centimeter. So this is the point D and extend this ray BD. Extend. Okay, this 9 centimeter is D and extend ray BD and label here point P. Then join DC. In third step, join DC. Okay, so this is the 75 degree. This is 6.3 centimeter. Then third step is construct the perpendicular bisector of this segment DC. So perpendicular bisector, how to draw perpendicular bisector? So make perpendicular bisector of this segment DC. So take more than half distance in your divider. Take more than half distance of seg DC. Take more than half distance. Okay, then make here one arc and from point C make another arc. ये आर्क तब तक निकालने हैं जब तक ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट नहीं होते. When two arcs intersect to each other, then from this intersecting point, this is the intersecting point of these two arcs, then draw perpendicular bisector. दोनों साइड से आर्क बनाना है. पॉइंट डी पर रख के इधर एक आर्क बनाइए और सेम डिस्टेंस से इधर एक आर्क बनाइए. देन पॉइंट सी पर रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट कीजिए और इधर भी आर्क को इंटरसेक्ट कीजिए. एंड जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे वो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन ड्रॉ कीजिए. दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेग DC. सो दिस इज द परपेंडिकुलर bisector. Okay, this is perpendicular bisector, and from this intersecting point then this angle is 90 degree. Okay, this is the 75 degree. जहाँ पर ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रहा सेग BD को, वहाँ से वो पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन कर दो. दिस इज एंड दिस इज द पॉइंट ए एंड जॉइंट सेग AC. सो दिस इज द ट्राइंगल ABC. मीन्स angle B equal to 75 degree and AB plus AC equal to 90 degree. So AB plus AD. Okay, AB plus AD equal to
since here BA plus AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यहाँ से ड्रॉ किया था डी तक 9 सेंटीमीटर, सो BA प्लस AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ओके, देन BA प्लस AC, BA ये AB प्लस AC मीन्स BA प्लस AC, BA plus AC also 9 centimeter, and therefore BA plus AD equal to BA plus AC. So here BA will get cancelled, and then AD equal to AC. Here AD equal to AC. ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए. अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो डायग्राम राइट है, अदरवाइज डायग्राम रॉन्ग है. तो दिस इज द ट्राइंगल ABC when its base and when its base and angle adjacent to the base and the sum of the length of remaining sides is given. This is our triangle ABC is the required triangle. Practice set 4.2. There are only 3 problems. Fourth problem is reduced. So practice set 4.2. All problems are same like this problem. Okay, so you can try three problems. If you have any doubt, please contact with me. Okay. Then construction second. To construct a triangle when its base angle adjacent to the base and difference between the remaining side is given. Construction second. To construct a triangle when its base angle adjacent to the base and difference between the remaining sides is given. सेकेंड टाइप में सिर्फ डिफरेंस रहेगा और फर्स्ट टाइप में सम रहेगी. इतना ही डिफरेंस है दोनों में. तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ रफ फिगर. सो टेक BC इज अ बेस 7.5 सेंटीमीटर. सो टेक BC इज अ बेस. In the rough figure, you take any difference. This is the BC. Don't take 7.5. आप रफ फिगर में छोटा सा कितना भी डिस्टेंस ले सकते, 7.5 लेना ज़रूरी नहीं है. ओके, देन एक अंदाज से कितना भी लो, बिकॉज दिस इज अ रफ डायग्राम. देन टेक एंगल ABC 40 डिग्री. दिस इज 40 डिग्री. So this is the 40 degree. Angle B is 40 degree. So this point is D. AB minus AC equal to 3 centimeter. So take 3 centimeter distance in your scale and make a here point, that is D, and extend sec D. Okay. Then next step, construct the perpendicular bisector. So first we have to draw the sec CD. And then construct the perpendicular bisector of the segment CD. Okay, then draw a perpendicular bisector of this is the perpendicular bisector of the segment CD. And जहाँ पर ये perpendicular bisector and BD इंटरसेक्ट होगा, जहाँ पर तब तक ये लाइन को एक्सटेंड करो जहाँ तक कि जब तक कि वो इंटरसेक्ट नहीं होती. यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया. ओके, सो हियर दिस इज द पॉइंट A एंड देन ड्रॉ सेग AC and therefore this is the triangle ABC. This is the perpendicular bisector. So this angle is 90 degree. Okay. Then BD is equal to 3 centimeter. This is the rough figure. रफ फिगर में डिस्टेंस कुछ भी लो, अंदाज से लो, ज़रूरी नहीं कि 7.5 लो, 40 डिग्री लो. ओके, देन वी हैव टू ड्रॉ मेन डायग्राम. फर्स्ट टेक ड्रॉ सेगमेंट BC and take 7 point distance at 7.5 centimeter.
7.5. So this is the BC. Okay. Then draw angle B equal to 40 degree. Then angle B is 40 degree. Here angle B. So this is the 40 degree. This is 40 degree. Okay. So draw segment. Then take a distance 3 centimeter, because AB minus AC is 3 centimeter. So take a distance 3 centimeter on your divider. Take a distance 3 centimeter. Here this is the 3 centimeter, and make the arc Okay, so this is the 3 centimeter. This is, इसको एक आधा लेबल दे दो. This is point D and make seg DC. Make segment DC. Then draw perpendicular bisector of this segment DC. Draw perpendicular bisector. सब स्टेप्स आपको सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हैं. सॉल्व एग्जाम्पल की जैसे सेम टू सेम प्रॉब्लम. Take more than half distance in your divider and make the arc on both sides. So this is make arc through point D and make another arc again through point D. Then make arc through this point C. Then again ये तब तक इसको बढ़ा जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया. देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू दिस इंटरसेक्टिंग लाइन. देन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये बीडी जिसको एक्सटेंड किया था, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, बीडी को एक्सटेंड करना है. एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए वो पॉइंट को देना है ए एंड जॉइंट सेक AC. एंड देन जॉइंट सेक AC. So this is the triangle ABC. Then write down here, this is the 40 degree. BC is equal to 7.5 centimeter. BD equal to 3 centimeter and AD equal to AC. Here AB minus AD, BD is equal to 3 centimeter. So AB, this is the analysis. AB minus BD, sorry, AB minus AD equal to है BD. Okay, this is the 3 centimeter. Okay, then given is that AB minus AC equal to also 3 centimeter. This is the 3 centimeter. Then AB minus AD equal to AB minus AC. AB cancel. Then AD equal to AC. और AD और AC इक्वल आना चाहिए, मीन्स AD और ये AC आना चाहिए इक्वल. एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड point A is on the perpendicular bisector of seg DC. Therefore point A is the intersection of ray BL and the perpendicular bisector of ray. This is the ray L. This is the ray L. This is the construction number 2. Okay. All problems are same. Okay. In 4.2 there are only 3 problems and you can try because all the problems are same. Okay. सभी प्रॉब्लम यही टाइप से करना है, इसी मेथड से 4.2 के ऑल प्रॉब्लम्स करने हैं. देन कंस्ट्रक्शन 3, प्रैक्टिस सेट 4.3
सॉरी 3 में 3 प्रॉब्लम है, ये सभी क्वेश्चन नंबर 3 के मेथड से करने। कंस्ट्रक्शन नंबर 3, construct a triangle if its perimeter, base and the angles which include the base are given. Means perimeter means sum of all sides are given. So problem number 1, example, construct triangle ABC such that, and the perimeter of triangle ABC is, that is AB plus BC plus CA equal to 11.3. So take base 11.3 centimeter. Okay. Then angle B equal to 70 degree and angle C equal to 60 degree, and construct triangle ABC. Then first we have to draw base. AB plus BC plus C equal to 11.3 centimeter. So take base 11.3 centimeter. ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको ए बी सी नाम नहीं देना, इसको कोई दूसरा लेबल लो, दैट इज द पी क्यू, एंड पी क्यू कितना है 11.3 सेंटीमीटर. देन एंगल बी इक्वल टू 70, तो 70 का हाफ 35, सो एंगल पी इज 35 डिग्री, सो एंगल पी लेना है 35 डिग्री. देन एंगल पी इक्वल टू 75 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री, बिकॉज एंगल बी करना है 70 के हाफ, दैट इज 35 डिग्री. सो दिस इज द एक्यूट एंगल एंड हियर 35 डिग्री. ओके, देन ड्रॉ ए सेगमेंट थ्रू पॉइंट P and this is the 35 डिग्री. देन एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का हाफ है 30 डिग्री, सो एंगल Q लेना है 30 डिग्री. 30 यहाँ पर 30. सो ड्रॉ सेगमेंट थ्रू दिस पॉइंट Q. ओके, जहाँ पर ये दोनों भी सेगमेंट इंटरसेक्ट हो गए, दैट इज A. सो इसको लेबल देना है A बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल ABC. सो हियर A. ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेग AP एंड AQ. AP एंड AQ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने. देन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेग AP and AQ. Then take more than half distance. Then take more than half distance of this ray AP and make the arc on both the sides. So here make the arc and here again make another arc through this point P. Again through this point A intersect this arc and again intersect this arc. Okay, आर्क को तब तक बढ़ाओ जब तक कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा. अब ये इंटरसेक्ट हो गया. सो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू दिस पॉइंट्स. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेग PA. ओके, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ साइड को इंटरसेक्ट कर रहा, उसको पॉइंट B लेबल दो. ओके, देन सेम मेथड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AQ. Then draw, make perpendicular bisector through these two intersecting point.
और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा वहाँ पे लेबल देना है C, और ये दोनों पॉइंट से AB एंड AC ड्रॉ करना है. AB and AC. This is the AB and this is AC. So triangle ABC, construct triangle ABC. तो ये triangle ABC construct हो गया. So this angle B equal to 70, angle C equal to 70, angle Q equal to 30. Okay, then this is the perpendicular bisector. So this side equal to this. Then this is the 90 degree. Again this is 90 degree. So this side equal to this, because this is the perpendicular bisector. Again this side equal to this side and this equal to this. Okay, so this is the our triangle ABC by using construction number 3. 4.3 for your practice. All problems are same. And problem set 4, question number 3 is reduced.